Okay, so now the third important decision that every financial manager has to take, it is related to the distribution of dividend. Okay, now see, dividend is that portion of profit which is distributed to shareholders. Okay, now in this decision, it has been decided that how much of the profit which has been earned by the company, and after paying tax, okay, after paying tax, कितना प्रॉफिट कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है शेयर होल्डर्स को, और कितना प्रॉफिट कंपनी अपने पास रखना चाहती है, जिसको बोलते हैं अपन रिटेन अर्निंग्स. ओके, now this decision always helps in maximizing the overall wealth of the firm as well as wealth of shareholders. Now see, the extent of dividend is, it depends on the current income of the investment. Okay, कितना इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न मिल रहा है, उसी के बेसिस पे आपका प्रॉफिट भी बढ़ेगा, और उसी के बेसिस पे आपकी रिटेन अर्निंग्स भी बढ़ेगी, और उसी के बेसिस पे आपकी फ्यूचर की अर्निंग कैपेसिटी भी बढ़ेगी. सो द एक्सटेंट ऑफ रिटेन अर्निंग ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस दिस डिसीजन कि कितना कंपनी अपने पास पैसा रखना चाहती है और कितना कंपनी इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है. लेट्स सी फर्दर के व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट्स डिसीजंस रिगार्डिंग डिविडेंड. Now the first factor is earnings. Now see, dividends are always paid out of current and past earnings. So therefore earnings are very, they are very much important. I should say they are a major determinant of the decision about dividend. अगर earnings ज़्यादा होगी तो dividend देने के chances ज़्यादा होंगे. अगर earnings कम होगी तो dividend देने के chances भी company के लिए कम होंगे. Next is stability of earnings. Other things remaining same, a company is, if a company is having stable earning, in a position to declare higher dividends. अगर कंपनी की अर्निंग स्टेबल है तो कंपनी क्या करेगी, ज़्यादा डिविडेंड्स डिक्लेयर करेगी. अगर इसका वाइस वर्सा सिचुएशन देखें तो कंपनी विच इज हैविंग अनस्टेबल अर्निंग्स, इट इज लाइकली टू पे स्मॉलर डिविडेंड्स. नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड्स. ये तीनों पॉइंट एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्टेड होंगे. इट इज ऑलवेज बीन फाउंड दैट कंपनीज जनरली फॉलो पॉलिसी ऑफ स्टेबलाइजिंग डिविडेंड पर शेयर, मतलब एक शेयर के ऊपर कितना डिविडेंड उसको मिलना चाहिए. सो द इंक्रीज इन डिविडेंड इज ऑलरेडी, या आई शुड से इट इज जनरली मेड व्हेन देयर इज कॉन्फिडेंस दैट देयर अर्निंग पोटेंशियल विल बी गोइंग अप. अगर उन्हें लगता है कि हमारी अर्निंग्स अगले साल भी बढ़ेगी तो ही हम डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे. तो अगर इसकी अदर वर्ड्स में बात करें, डिविडेंड पर शेयर कभी भी ऑल्टर नहीं होगा, हमेशा सिर्फ एक ही बार बनाया जाएगा, और इसी के बेसिस पे हम हर साल या हर पर्टिकुलर अर्निंग्स में से जो कंपनी है वो डिविडेंड पे आउट करेगी. तो डिविडेंड पर शेयर हमेशा एक रहेगा, बट अर्निंग्स विल बी टेम्परेरी. Now let's come on to the next factors, that is growth prospects, cash flow position and taxation policy. Growth prospects, see, companies having good growth opportunities, they will retain their earnings more, and they will be not going to give dividend. तो उनके पास अगर ग्रोथ का चांसेस है, उन्हें लगता है कि नहीं हमें हमारी कंपनी को ग्रो करना है, आगे एक्सपैंड करना है, तो वो प्रॉफिट का पैसा अपने पास रिटेन करके रखेंगे, ना कि डिविडेंड पे आउट में. Next is cash flow position. Dividends involve an outflow of cash, so a company may be profitable but short on cash. So availability of enough cash in the company is necessary for declaration of dividend by it. कंपनी के पास कैश होना जरूरी है तो अच्छे से डिविडेंड पे कर सकती है. अगर कंपनी के पास कैश नहीं है तो कंपनी विल नॉट गो फॉर पेइंग आउट डिविडेंड. Next is taxation policy. Now see, the choice between payment of dividends and retaining the earning is to some extent has been affected by the tax treatment of dividends and capital gain. Capital gain का मतलब होता है, आपने लेट्स से इसको समझ दो, पहले आपने ज़मीन खरीदी 1 लाख रुपए की, और 3 साल तक उस ज़मीन के भाव बढ़ते बढ़ते 1.5 लाख हो जाते हैं, तो ये जो 50,000 रुपए है ये उसके लिए कैपिटल गेन होगा. सो इफ टैक्स ऑन डिविडेंड इज हायर, it would be better to pay less by way of dividends. As compared to this, higher dividends may be declared if tax rates are relatively lower. अगर टैक्स रेट कम है तो ज़्यादा डिविडेंड पे आउट किया जा सकता है, अगर टैक्स रेट ज़्यादा है तो कम डिविडेंड पे आउट किया जाएगा. दो द डिविडेंड्स आर वेरी मच फ्री ऑफ टैक्स इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर्स, क्योंकि इसके ऊपर शेयर होल्डर को टैक्स नहीं देना पड़ता है. एक डीडीटी करके टैक्स होता है जो कंपनीज के ऊपर लिवाई होता है. डीडीटी का मतलब होता है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स. अंडर
under the present taxation policy, shareholders are likely to prefer higher dividends. Okay. Next factor is shareholder preferences. So while declaring dividends, management usually keep in mind the preferences of the shareholders. Now, if the shareholders in general they desire that at least a certain amount is to be paid, as in the form of dividend, so companies are likely to declare the same. So there are always some shareholders who depend upon their regular income from their investments. तो ऐसे शेयर जो चाहते हैं कि नहीं डिविडेंड होना चाहिए, तो उनके लिए कंपनी सोचती है कि नहीं वी शुड पे आउट सर्टेन डिविडेंड्स. क्यों? क्योंकि देर आर सर्टेन पीपल्स लाइक ओल्ड एज पीपल जो अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर ही उनकी रेगुलर डे टू डे एक्टिविटीज को सी कर रहे हैं. नेक्स्ट इज स्टॉक मार्केट रिएक्शन. नाउ सी स्टॉक मार्केट का रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. इन्वेस्टर्स ऑलवेज प्रिफर हायर डिविडेंड्स. ज्यादा डिविडेंड अगर कोई कंपनी पे करती है तो उसके शेयर की वैल्यू भी हमेशा बढ़ती है. सो सिमिलरली अ डिक्रीज इन डिविडेंड मे हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द शेयर प्राइस इन द स्टॉक मार्केट. डिविडेंड अगर डिक्लेयर हुआ है तो पॉजिटिविटी आएगी, डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया है या डिक्रीज किया है डिविडेंड का रेट तो नेगेटिविटी आएगी. सो दस द पॉसिबल इम्पैक्ट ऑफ डिविडेंड पॉलिसी ऑन इक्विटी शेयर प्राइस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर which has been considered while dealing with such kind of decisions. Next, access to capital market. Large and reputed companies generally have easy access to capital market and therefore they may depend less on retained earnings and they may go for higher dividend payout. Legal constraints and contractual constraints. Now see, there are certain provisions in Companies Act which places certain restrictions on paying out dividends. So such provisions are also to be followed whenever you are declaring dividends. And even when a company has been granted loan, sometimes the lender may impose certain restrictions and they may treat all these terms and conditions into their contracts. So if dividend have been paid out, this may violate certain terms and conditions of the loan agreement. So that's how dividend have been influenced by certain factors of an company. Now this is one of the important topic, that is financial planning. Now see, financial planning is deciding in advance how much to spend and on what to spend. Okay. Now it is essentially a preparation of financial blueprint of an organization's future operations. Now see, there are certain, it includes the amount of finance which has been needed by an enterprise. उसे कितना पैसा चाहिए, कहाँ से वो पैसा आएगा, determination of sources of funds, the patterns of securities to be issued, किस तहत आप securities को issue करोगे, how your policies will be there for proper utilization and administration of funds. So it determines the total capital requirement. आपका firm कितनी कैपिटल चाहिए, उसे कितना कैपिटल कहाँ से उतारेगा या कितना कैपिटल कहाँ से लाएगा, ये दिखाता है आपका फाइनेंशियल प्लानिंग. सो इट हेल्प्स द मैनेजर टू फोरकास्ट इन द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स. ठीक है, वो फ्यूचर की चीजों को पहले ही फोरकास्ट करके पॉलिसीज बनाएंगे और फिर देखेंगे फर्म को कितनी रिक्वायरमेंट है, वो फर्म पैसा कहाँ से उठा सकता है. It may also consider fixed capital as well as working capital requirements. Now see, there are certain objectives of financial planning. These objectives are to ensure availability of funds whenever there are requirement. So this includes a proper estimation of the funds for different purposes, such as for the purchase of long-term assets or for meeting day-to-day activities of the business. Apart from this also, there is a need to estimate the time at which these funds are to be made available. किस समय पे, right time, right funds. This is the concept. ठीक है. Then second is, and also to ensure firms don't raise funds unnecessarily. Now see, excess funding is also bad and deficient funding is also bad. So there should be an adequate funding. Even if there is some surplus of money, good financial planning would put it to the best possible uses so that financial resources are not left idle and even they don't unnecessarily add it to the cost. Now see, a proper matching of funds requirements and their availability is sought to be achieved with the help of financial planning. Now there are certain importance which can be dealt in the next slide. You just remember one thing, financial planning का एक छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है, whether it can be in 3 marker or 5 marker or 6 marker. Write a short note on financial planning या financial planning के importances या case study के form में कुछ भी हो सकता है. So there are certain importances like it helps in forecasting. ये आपको एक firm को एक prepare करता है for the future. Now see, it tries to forecast what may happen in future under different business situations. For example, a growth of 20% in sales is predicted. However, it may happen that the growth rate eventually turns out to be 10% or 30%. You are not sure
कितना होगा, आपने सिर्फ प्रिडिक्ट किया, आपने फोरकास्ट किया कि 20% हो सकता है, 10% भी हो सकता है, it may be 30% also. So many items of expenses shall be different in these three situations. So by preparing a blueprint for all the three situations, 10%, 20% और 30% के हिसाब से the management may decide what must be done in each of these situations. So जब भी कोई situation arise होगी, उस situation में आप already prepare रहोगे. Then it helps in avoiding business shocks and surprises. तो इसका अपन ये भी बोल सकते हैं, avoids dynamicity. It helps in avoiding business shocks, surprises, and helps the company in preparing for the future. It links to future. It coordinates to the business functions. It utilizes funds properly. Now see, it also reduces wastage of resources, like how detailed plans of action prepared under financial planning. It reduces waste. It reduces duplication of efforts, and it also gaps in planning. Okay. सी इट ट्राइज टू लिंक कि फंड को कहाँ से लाना है और फंड को कहाँ पर यूटिलाइज करना है, ठीक है. इट लिंक्स बिटवीन इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग डिसीजन. इट मेक्स एन इवेल्युएशन ऑफ हाउ द एक्चुअल परफॉर्मेंस विल बी डन. It provides a detailed objectives for various business segments. It provides a detailed analysis of how the performance will be evaluated in the future course of action. So these all from the point of view of financial planning.